Good evening, students. Welcome to SAIKRISHNA Institute. Voice clear आछि पिला माने टिके confirm करिवे. ओके स्टार्ट करिवा आज रो सेशन. आज 2022 रो पेपर 2 रो क्वेश्चन एनालिसिस अछि. तो काली त आपण मानकर एग्जाम तो देखंतु आज गोटे मॉक टेस्ट टाइप रे एटाकू नै जायंतु. देखंतु क्वेश्चन नंबर 1 देखंतु. Which is not a tool of observation. या भितर कोटा गोटे टूल नुहे ऑब्जर्वेशन रो. अचीवमेंट, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट ना एनेक्डोटल रिकॉर्ड. ए चारटा जक भितर ऑब्जर्वेशन रो टूल कोटा नुहे. यस वेरी गुड कृष्णचंद्र. अचीवमेंट गोटे टूल नुहे. रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड एरा सब होचे गोटे टूल. वेरी गुड. आंसर हे गला ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 2 र आंसर दियंतु. पिला माने स्पीड जिबा आपण माने पुनी पढिबे काले आपनकर एग्जाम गोटे मॉक टेस्ट हिसाब रे एटा को नियंतु. ये संकिता ए इज द करेक्ट आंसर. अच्छा जो माने सेशन न अछंती मते लास्ट रे कहिबे 30 आउट ऑफ केते आपनकर रहिला. केते आपनकर रहिला 30 रु. If a test gives the same results whenever it is repeated, it is called as. गोटे टेस्ट से बेले सेम रिजल्ट दोची रिपीटेडली एटा को हमें कोन कहिबा. वैलिडिटी, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी ना प्रेडिक्टेबिलिटी. वेरी गुड. रिलायबिलिटी करेक्ट आंसर. म आपण मान को सब बेले कहि छि जते बेले कंसिस्टेंसी रहिबो सेते बेले रिलायबिलिटी आसे जीवो. आज मु एते एलाबोरेट करूनी. म आपण मान को टाइम वेस्ट करिया पई चाहुनी. Which type of validity is important in case of achievement testing? कौन हबो एटा आंसर. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. को टाइप रा वैलिडिटी टा इंपोर्टेंट रहबो अचीवमेंट टेस्टिंग रे. कंटेंट वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ना कंकरेंट वैलिडिटी. कौन हबो आंसर. अचीवमेंट टेस्टिंग केस रे को टाइप रा वैलिडिटी टा इंपोर्टेंट रहिबो. जते बेले हम अचीवमेंट टेस्ट करूचे को टाइप रा वैलिडिटी रहिबो. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहउचंदी. नो. अचीवमेंट टेस्ट रे हमरो कंटेंट वैलिडिटी रहिबो इंपोर्टेंट. कंटेंट ऊपर वैलिडिटी रहिले अचीवमेंट टेस्ट टा बेटर हे परिबो. आंसर हे जिबो हमर बी. क्वेश्चन नंबर 4 देखंतु. रिपीट क्वेश्चन एटा आपण मन को मु काली क्लास रे कहिथिले क्वेश्चन. व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स. कंटेंट वैलिडिटी हबो पिला माने राइट आंसर. अचीवमेंट टेस्ट पई हमरो कंटेंट वैलिडिटी होची इंपोर्टेंट. मन रखंतो समस्त क्वेश्चन टा.
2022 रे टिके टॉप लेवल क्वेश्चन आस्थिला से टिके सेंट्रल लो क्वेश्चन उठैथिला सेंट्रल पैटर्न रो माने आपनकर जो सीटेट होची सेही पैटर्न रो टिके से क्वेश्चन उठैथिला वेरी गुड 5 इज द करेक्ट आंसर हमर आंसर हे जिवो सी मोडा बुझौनी काहे कि ना मु काली डिटेल्स आपन को कहिथिली एक्सप्लेनेशन करिकी जो माने देखिया पई चाहउचंदी से माने कालीर क्लास टा को देखि देबे व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी traits which are present at the time of birth traits which a child acquire in lifetime trait that achieved from the environment traits acquired through the learning what do you mean by heredity very good krishna chandra a is the correct answer amar jo trait ta amar present thae at the time of birth re clear birth time ru hi amar trait ta am body re present thae सेटा होची हेरिडिटी मीनिंग एनवायरनमेंट रो अचीव करेनी लर्निंग रो एक्वायर करेनी हमरो बर्थ टाइम रो ही प्रेजेंट थाए क्वेश्चन नंबर 6 रो आंसर दियंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट व्हिच अफेक्ट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक पॉलिटी मोरल ना जेनेटिक्स कौन हम आंसर क्वेश्चन नंबर 6 वेरी गुड अंकिता डी इज द करेक्ट आंसर हमर हेजिबा आंसर कोन जेनेटिक्स नॉट कहिची पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट व्हिच अफेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रे हमर जेनेटिक्स ता आसुनी इकोनॉमिक आसुची पॉलिटी आसुची मोरल आसुची हमर कोन जेनेटिक्स ता एनवायरनमेंट रे आसुनी पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट कहिची पिला माने पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट कहिची जेनेटिक्स आसीबनी क्लियर बी हबनी पॉलिटी हबनी पॉलिटिक्स हमर सब एनवायरनमेंट रो ही आसुची इकोनॉमिक हैला पॉलिटी हैला मोरल हैला ए सब गुडा हमर एनवायरनमेंट रो ही हमर ह्यूमन डेवलपमेंट होउची जेनेटिक्स ता हमर हेरिडिटरी डेवलपमेंट क्लियर छोट छोट वर्ड सब माइंड रे रखिबे ताकि आपण क्वेश्चन भूल करिबेनी Yes, D is the correct answer. Question number 7 answer दियंतु. What is the approximate age range for early adolescence? Early adolescence रो age range टा केते रहइबो? Stages रो हमरो सब ईयर रे क्वेश्चन आसुची. तो चारटा जाक स्टेजेस आपण माने भलो से देखि जिबे. पियाजेट थ्योरी, भाइगोट्स्की थ्योरी ए किछि भी स्किप करिवेनी. क्लास रो सेशन रो लास्ट रे आपण मानको कहि देबे किछटा इंपोर्टेंट टॉपिक जो गुडा कि आपण रिपीटेडली देखि देखि जिबे yes 7A is the correct answer 10 to 13 years हे जिवो ए ठीक थिला कंफ्यूज काहे होचंती डिलीट काहे कले
ए ठीक थिला 7B कहीं की हबो अर्ली एडोलेसेंस कहिची यस तमन्ना ए इज द करेक्ट आंसर 10 to 13 टा हबो अर्ली एडोलेसेंस एज रेंज यस अंकिता 7A कृष्णचंद्र 7A कहिथिले काहे की डिलीट कले बी हबो नहीं अर्ली एडोलेसेंस रो एज रेंज होची 10 to 13 क्वेश्चन नंबर 8 रा आंसर दियंतु कंफ्यूज हुअंतु नहीं ड्यूरिंग पोस्ट नाटल पीरियड व्हाट हैपेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम ए टाइप रो क्वेश्चन मध्ये आसुची जोटा कि आपण माने देखि पारुचंती आसीची फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स आफ्टर बर्थ डेवलपमेंट ऑफ इमैच्योर सेल्स एट बर्थ formation of new cells up to 3 years after birth formation of new cells up to 6 years after birth कौन हम आंसर ड्यूरिंग पोस्ट नाटल पीरियड कथा कहिची वेरी गुड 8 रा आंसर हबो बी डेवलपमेंट ऑफ इमैच्योर सेल एट बर्थ हमर सेते बेले कोन हबो इमैच्योर सेल टा डेवलपमेंट हबो बॉडी रे पोस्ट नाटल पीरियड रे इमैच्योर सेल रो डेवलपमेंट हबो क्वेश्चन नंबर 9 आंसर दियंतु लास्ट रे मते कहिबे कहार केतरा ठीक हैला केते रखिले आपण आउट ऑफ 30 सेटा आपण माने लास्ट रे कमेंट रे जणेबे क्वेश्चन नंबर 9 आंसर दियंतु फास्ट जिबा पिला माने अकॉर्डिंग टू गेस्ले which of the following is not a type of behavior during infancy stage not कहिची motor language adaptive universal yes 8B ठीक अछि गैसल को मतरे कौन हबो आंसर कोटा गोटे हबो नहीं इन्फेंसी स्टेज रो बिहेवियर कोटा हबो नहीं नाइन आंसर दियंतु पिला माने फास्ट आंसर दियंतु जहा भाबुचंदी कुहंतु म आपन आंसर कहिबी वेरी गुड 9 हे जिवो डी मोटर हैला लैंग्वेज हैला अडैप्टिव हैला ए सब इन्फेंसी स्टेज रे आसी जिवो जेतु नॉट को पचरिची सेति पई यूनिवर्सल टा हबनी यूनिवर्सल सेमति किछि न थाए क्वेश्चन नंबर 10 आंसर दियंतु इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑफ डेवलपमेंट सर्च ऑफ लाइफ रिचेस इज हाईएस्ट पीक ए टर्म टा आपनकर मन अछि कि नहीं को स्टेज रे आसे थाए infancy childhood adolescence na adulthood surge of life reaches in highest peak
गोटे गोटे इंपोर्टाट टर्म एमती अच्छी चार्टा जाक फेज रे चार्टा जाक स्टेज रे आपण मन को मन रखिया पड़िबो। सॉरी वेरी गुड पिला माने एडोलेसेंस रे एटा हाईएस्ट पीक हे जाई थाई तारो वेरी गुड ठीक अछि समस्तंकर आंसर हे जिवो सी। साई कृष्ण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को आपण माने सब्सक्राइब करंतु सेशन को लाइक करंतु जदी करि नाहंती पर्यंत शेयर कर देंतु काली जो माने एग्जाम देबे कमेंट करंतु केमिति लागु छ आपण मानकु सेशन। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर देंतु the emotional content of the initial phase of life is known as the emotional content of the initial phase of life excitement stress anxiety fear initial phase of life कथा कहि छी पर्टिकुलर एई वर्ड को बेस करके आंसर दियंतु। यस 10 रो सी हबो 11 ना आंसर दियंतु। ए कहउचंती सी ए यस वेरी गुड एक्साइटमेंट है जो हमारा करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। इनिशियल फेज ऑफ लाइफ कहि माने हमरो इनिशियल फेज रे हमरो एक्साइटमेंट रहिबो कि हमें को टाइप रो काम करिबा सेही एक्साइटमेंट रे हम कामटा करिबा। इनिशियल स्टेज रे हमरो स्ट्रेस आसीबोनी एंजाइटी आसीबोनी किबा फियर मध्ये आसीबोनी। क्वेश्चन नंबर 12 रो आंसर दियंतु अकॉर्डिंग टू हरलॉक का क्वेश्चन आसी गला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is the meaning of social development attaining maturity by interacting with peers attaining maturity in social relationship attaining maturity only the family attaining maturity only in the neighborhood कौन अब आंसर 11 बी हबनी अंकिता 11 ए हबो 12 रे आंसर दियंतु। वेरी गुड बी इज द करेक्ट आंसर attaining maturity in social relationship पचारे जी हरलक का मतरे कोटा गोटे सोशल डेवलपमेंट रो मीनिंग सोशल रिलेशनशिप टा केमिति मैच्योरिटी हबो सेटा हरलक हमहु कहिथिले। क्वेश्चन नंबर 13 देखंतु व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम 7 to 12 year or up to the onset of puberty 7 to 12 year कथा कहि छी infancy pre childhood early childhood sorry later childhood ना adolescence थर्टीन आंसर दियंतु 13 सी सी यस वेरी गुड लैटर चाइल्डहुड को हमें कौन 7 to 12 एज बोली कहि थाउ सेही एज रो पिला माने लैटर चाइल्डहुड रे आसी थांती देखुचन तो स्टेज रो हमर केतेटा क्वेश्चन आसुची तो सब स्टेज को प्रॉपर्ली देखि के अपन माने जिबे। क्वेश्चन नंबर 14 देखंतु which of the following is a basic chemical primarily responsible for genetic inheritance
DNA, RNA, क्रोमोजोम ना जीन्स? Yes, C is the correct answer. समस्तଙ୍କର ठीक अछि 13 C हबो. A 14A. Yes, सरस्वती, अजय, अंकिता. Yes, समस्तଙ୍କର ठीक अछि. DNA है जे हमर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन कहि छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक केमिकल प्राइमरीली रेस्पोंसिबल. हमें DNA को गोटे बेसिक केमिकल प्राइमरीली रेस्पोंसिबल बोली गोटे कहि थाओ जेनेटिक इनहेरिटेंस रो गोटे सिंबल. क्वेश्चन नंबर 15 आंसर दियंतु. Which of the following is not related to the process of learning as meaning? Not पचारिची. Not related. Learning is an active process. Learning involves language. Learning is contextual. Learning is instantaneous. फिफ्टीन आंसर दियंतु. नॉट पचारिची. लर्निंग टा गोटे एक्टिव प्रोसेस हबो. इन्वॉल्व हबो लैंग्वेज रे. कॉन्टेक्चुअल हबो. इंस्टेंटेनियस हबोनी. लर्निंग पे प्रॉपर प्लानिंग दरकार. ता पई प्रॉपर सेटअप दरकार. ता माने केमिति हमें टीचिंग टा दबा कोन करिबा सेटा इंस्टेंटली हबोनी. डी इज द करेक्ट आंसर. यस, जो माने डी देछन तांकर करेक्ट अछि. क्वेश्चन नंबर 16 देखंतु. The process of assimilating new information as part of the existing cognitive structure is known as subsumption, conjunction, assumption ना presumption. सिक्सटीन आंसर दियंतु. गोटे न्यू इनफॉरमेशन जेतेबेले हमर एक्जिस्टिंग कॉग्निटिव जहां हमर अछि हमें जो जिनसटा जानि छे गोटे न्यू इनफॉरमेशन सेथरे ऐड हबा से टर्म टा को हमें कोन कहिबा. नो. 16 हबा आंसर ए. मन रखंतो समस्त एक्चुअली एटा नुआ माने गोटे नुआ वर्ड गोटे एक्चुअली माने इवैल्यूएशन रे एई जिंसटा नाही माने एसिमिलेशन रे. तो एटा मन रखि जंत कि सबजम्पशन हबा हमरो आंसर. सेवेंटीन आंसर दियंतु. Which of the following is not true about trial and error theory of learning? कोटा या भितरु ट्रू नुहे. नॉट पचारिची. Learning is incremental. Learning is the result of the formation of connections. Learning is mediated by ideas. Learning is not insightful. 16 टा बास बने रखि दियंतु टर्म टा. जदि क्वेश्चन आसी जिवो आपण माने जेमति भूल करिवेनी.
accommodation हबा कथा जेहेतु सेटा नाही तार अल्टरनेट रे सबजम्पशन हबो मन रखंतु सेटा 17 ना आंसर दियंतु भूल करंतुनी पिला माने लर्निंग टा इनसाइटफुल एटा ठीक अछि नॉट पचारिची इंक्रीमेंटल हबो मेडिएटेड बाय आईडिया एटा हबोनी एठी पहिची ट्रायल एंड एरर ट्राई करिवे एरर आसीबो ट्राई करिवे एरर आसीबो देन से गोटे प्रॉपर माने गोटे कोन जोटा ठीक रेस्पॉन्स ता पाखरे से पहुंचीबो मेडिटेड बाय आईडिया एटा हबोनी से ट्राई करि कर सेठी पहुंचुची लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन एटा मध्य ठीक अछि आंसर हे जबो सी एक्चुअली क्वेश्चन टिके टफ थिला 2022 रे कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन थिला ए क्वेश्चन ओडा आपन कंफ्यूज लागिबो 22 पूर्वर एमिति को भी ईयर रे ए लेवल रो क्वेश्चन आसी नथिला ए 22 रे ही एतिक लेवल रो आस्थिला माने से कि सीबीएसई रो उठैथिला सब क्वेश्चन तार क्वेश्चन नो पैटर्न बीएसई रो जहां भी गोटे पैटर्न थाए किछटा क्वेश्चन आपण मानकर सिमिलर आसीबो प्रीवियस ओटेट संगे किंतु बहुत गुडे क्वेश्चन आपण माने नुवा देखिया पई पाइबे जो 2022 रे जो एग्जाम ता हेथिला तो किछि नै काली पई रिलैक्स हे जानतो ए सब तो आपण प्रैक्टिस करथिबे सेमते किछि प्रॉब्लम हबोनी अरेंज द फॉलोइंग 4 इंटर रिलेटेड स्टेप ए जो चारटा जाको स्टेप देइची ताको सीक्वेंशियली सजांतु ये 17 सी हबो 18 में आंसर दियंतु बंधुरांक कथा पचारि एठी आइडेंटिफाइड बाय बंधुरा इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अल्बर्ट बंधुरा तमन्ना कहउछंती सी 18 सी मनीषा कृष्णचंद्र 18 डी कहउछंती फास्ट हमर आसीबो एक्विजिशन देन आसीबो रिटेंशन देन आसीबो परफॉर्मेंस देन हमर आसीबो कॉन्सिक्वेंस कोठी रहउची सेटा 2i i भी थर्ड i सी आई जी हमरो करेक्ट आंसर यस जो माने सी देथिले से मानकर ठीक अछि नेक्स्ट जिबा सीक्वेंस ऊपर मध्य सब ईयर रे क्वेश्चन आसीची ए ईयर रे टिके ट्रिकी पकेइची नहले प्राय सब ईयर रे हमें जो डिस्कशन करिचे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रे आसे किबा ओटे प्रिपरेशन रे आसे एटा टिके ट्रिकी देथिला हेले भी किछ कथा नै यस सी इज द करेक्ट आंसर 19 नो आंसर दियंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एडवांस ऑर्गेनाइजर अगेन नॉट advanced organizers are special introductory statements it acts as a conceptual bridge it encourages behavioral modeling it facilitates meaningful learning कोन तो आंसर कोन हबो ए हबो भल से क्वेश्चन पढंतु सॉरी ऑप्शन पढंतु एडवांस ऑर्गेनाइजर कथा कहिची
जो माने एडवांस ऑर्गेनाइजर थांती तांकर गोटे स्पेशल इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट थाए इटा से स्पेसिफिक गोटे मेंशन कर देइची एडवांस ऑर्गेनाइजर्स को कथा एठी स्पेसिफिक से मेंशन कर देइची वो तांकर गोटे स्पेशल इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट गोटे थाए निजस्व स्टेटमेंट तांकर गोटे थाए तो नॉट कहिचे माने एठी हबनी कॉन्सेप्चुअल ब्रिज ऊपर मध्ये से माने काम करि थांदी क्लियर फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग एटा मध्ये पूरा ठीक अछि मीनिंगफुल लर्निंग को से माने फैसिलिटेट करि थांदी बिहेवियरल मॉडलिंग एटा एठी हमर आंसर हबनी क्लियर यस सी इज द करेक्ट आंसर हमको एटा मध्ये ठीक लागुची मु भी कहूनी एटा पूरा भूल अछि किंतु क्वेश्चन अकॉर्डिंग रे हमर आंसर हे जबो सी क्लियर जेहेतु एडवांस ऑर्गेनाइजर कथा सेठी मेंशन कर देइची गोटे पर्टिकुलर बिहेवियरल मॉडलिंग को नै कि से माने एनकरेज करिवेनी से माने तांकर निजस्व इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जहां भी थिबो कॉन्सेप्चुअल ब्रिज गोटे रहिबो से माने मीनिंगफुल लर्निंग को फैसिलिटेट करिवे हमर एठी आंसर हे जबो सी यस 20 रे आंसर दियंतु which of the following is not a characteristic of creative learners again not question भरी भरी के नॉट क्वेश्चन से पकेइची 2022 रे कौन हबो आंसर करेजियस हबो क्यूरियस हबो थिंकिंग फॉर द बेस्ट पॉसिबल आंसर विजनरी क्रिएटिव लर्नर जो माने क्रिएटिव लर्नर तांको मानक पई ए चारटा जक भितरु कोटा सुइटेबल हबो नाही यस डिस्क्राइब करली क्वेश्चन नंबर 20 र आंसर दियंतु डी कहउचंदी डी कहउचंदी 20 ए पिला माने एटा एक्चुअली इजी क्वेश्चन एटा अपन माने काहे के कंफ्यूज होचंदी एतरे किछि कंफ्यूज होबार नहीं क्रिएटिव लर्नर कहिछि क्रिएटिव लर्नर बुझि परथिबे जो मानक पाखरे क्रिएटिविटी रा पावर अछि से माने करेजियस रहिबे ना उत्कंठा तांका भीतर रहिबो से माने आउ कोन क्रिएटिविटी देखाई परिबे से माने जदि एटा से करि पारुछन याटा बेटर केमिति करि परिबे उत्कंठा न रहिले से माने केमिति करिवे तो एटा हबनी एठी कहिछि नॉट करेजियस से माने रहिबे क्यूरियस से माने डेफिनेटली रहिबे विजनरी भी रहिबे कहिना दूरदृष्टि तांकर रहिबो बुझि पारुछंदी दूरदृष्टि जति नथिबो से माने कामडा को एबे जो कामडा को करूछंदी आगु को जेमते सेटा यूटिलाइज हेई परिबो विजनरी ता तांकर रहिबो थिंकिंग फॉर ए बेस्ट पॉसिबल आंसर एटा हबनी गोटे बेस्ट पॉसिबल आंसर को से माने केवल भाबी की करिवे अलगा किछि ट्राई करिवेनी एटा हबनी यस सी इज द करेक्ट आंसर साई कृष्ण इंस्टीट्यूट टेलीग्राम ग्रुप रे अपन माने जॉइन हे जानतो ए क्यूआर कोड को स्कैन करिकि बहुत गुड इंफॉर्मेशन अपन माने पाई जेबे अपडेट पाई जेबे इथरे टेलीग्राम ग्रुप रे 21 रे आंसर दियंतु यस which of the following is not a behavioral index of the children with learning difficulties again not कहिछि which of the following is not a behavioral index of the children with learning difficulties कथा कहिछि clarity in thinking easy onset of fatigue skips lines while reading impulsive behavior in talk and action not कहिछि क्वेश्चन जो चिल्ड्रन का पाखरे लर्निंग डिफिकल्टीज ता देखा जाए ए चारटा जक स्टेटमेंट भितरो कोटा तांका पाखरे न थाए
पिला माने तरतर हुअंतुनी डी कहउचंती आंसर केमिति डी हबो है पुनी सी कहलेनी 21 बी ओके सेमानक पाखरे क्लारिटी इन थिंकिंग ता देखा जाए नहीं तांको थिंकिंग रो क्लारिटी न थाए तांको थिंकिंग रे क्लारिटी न थाए क्लियर नॉट कहि छि एठी हमकु कोन कहि छि क्वेश्चन नॉट कहि छि कि नहीं हां कि ना क्लारिटी ता केमिति देखा जिवो नॉट कहि छि माने हमर आंसर ए हे जिवो कि नहीं फैटिग्यू माने क्लांति से माने क्लांति अनुभव करिवे इजीली से माने क्लांत हे जिवे जो पिला मानक पाखरे लर्निंग डिफिकल्टीज थाए स्किप से माने करिवे इंपल्सिव बिहेवियर रहिबो तंगर टॉक और एक्शन रे कथा कहला बेले किंबा किछ ओडे जिंस एक्शन करी देखला बेले तांको बिहेवियर रे आपण माने इंपल्सिव देखिया पई पाइबे क्लियर ए इज द करेक्ट आंसर काहे कि पिला माने भूल करूचंती ए टाइम रे जम्मा भी पैनिक होंतुनी रिलैक्स हे के आंसर करंतु किछि भूल हबनी लर्निंग आज सोशल एक्टिविटी बिलीव्स दैट लर्निंग टा गोटे सोशल एक्टिविटी बिलीव दैट कोन हबो को स्टेटमेंट उटा पढंतु स्पीच कैन बी यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स द कल्चर गिव्स द चाइल्ड द कॉग्निटिव टूल्स नीडेड फॉर डेवलपमेंट mental development is possible through social interactions ideas came only from an individual social activity कथा कहि छी yes very good जो माने सी कहउचंदी तांकर आंसर ठीक अछि मेंटल डेवलपमेंट इज पॉसिबल थ्रू सोशल इंटरेक्शन जेतु सोशल एक्टिविटीज कथा कहि छी सोशल इंटरेक्शन द्वारा तांकर मेंटल डेवलपमेंट हेइ थाए हे पुणी काहे के आपण माने एठी बी कहिले द कल्चर गिव्स द चाइल्ड द कॉग्निटिव टूल नीडेड फॉर डेवलपमेंट एठी पूरा पूरा क्लियरली कल्चर कथा ही कहि छी हमको क्वेश्चन न पचारि सची सोशल एक्टिविटी कथा सोशल इंटरेक्शन द्वारा हबो मेंटल डेवलपमेंट ता सिंपल यस आंसर सी क्वेश्चन नंबर 23 र आंसर दियंतु the child having the problems in speech articulation are known as speech articulation कथा कहि छी speech dyslexia dysgraphia dysphagia apraxia कोन हबो आंसर कोन पिला माने अप्राक्सिया कहउचंती
स्पीच रो डिजेबल कथा कहिछि रीडिंग कथा कहिथिले डिस्लेक्सिया होई थांता डिस्ग्राफिया मध्ये हबो नहीं डिस्फाजिया हबो हमर आंसर अप्रेक्सियाटा होछि मेंटल डिसऑर्डर पिला माने अप्रेक्सियाटा हमर आसीबो मेंटल डिसऑर्डर हमें कहि परिबा कोन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भूली जाउछंदी रीडिंग रे प्रॉब्लम हेले डिस्लेक्सिया एठे स्पीच कथा कहिछि डिस्फाजिया हबो आंसर क्लियर आंसर हे जबो सी क्वेश्चन नंबर 24 रो आंसर दियंतु which term is used to express the totality of the learning experiences that the pupil receives through manifold activities in the school curriculum content lesson plan syllabus dyslexia hoche reading disability clear सरस्वती yes very good curriculum हे जबे right answer एटा उटे repeat question पढ़ंतु ए क्वेश्चन पढ़ंतु क्वेश्चन पढ़िबिनी पिला माने डायरेक्ट आंसर कहबी not पचारिछि which of the following is not a strategy being recommended by the program of action 1992 एटा मन रखंतु POA हमर 1992 रे आस्थिला for the education of SC/ST children एटा मन रखि थांतु कोन हबो not कहिछि equalization of educational development एटा करेक्ट हबो equalize कथा सेतरे कुहा हिची ensuring the 100% enrollment of SC/ST children in the school leading to satisfactory completion at the primary stage of education एटा मध्ये करेक्ट हबो से 100% कथा कहिची at least 75% of children in the age group of 11 to 14 will have to enroll and retained the school leading to a satisfactory completion of class 8 रे 75% एटलीस्ट रहिबा दरकार 10 11 to 14 इयर रो पिला माने एनरोल करिया दरकार एटा मध्ये कहिछि एटलीस्ट 75% of the teacher working at the primary stage be treated एटा फुल अछि डी हे जे हमर करेक्ट आंसर यस डी हबो यस रश्मिरंजन डी हबो 26 आंसर दियंतु which quality is not found in a good test ए क्वेश्चन ता हमें डिस्कशन करिचे एबे जो हमर रिपीटेडली चलीची एमसीक्यू सेशन ए क्वेश्चन हमें डिस्कशन करिचे किंतु टिके डिफरेंट अछि कोंतु
Yes, very good सरस्वती रश्मि रंजन फ्लेक्सिबिलिटी रहइबो नहीं सॉरी yes हमर आंसर है जो फ्लेक्सिबिलिटी वैलिडिटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी सब टेस्ट रहइबो फ्लेक्सिबिलिटी रहइबो नहीं टेस्ट रो फ्लेक्सिबिलिटी रखि देले तो सरला आ कोन हबो 27 आंसर दियंतु which of the following approach is different from the other three चारटा जक भितर कोटा डिफरेंट अछि तीनटा कोटा डिफरेंट अछि डिस्कशन सेंटर टीचर सेंटर लर्नर सेंटर ना लर्निंग सेंटर यस वेरी गुड 27 ए हबो जी ए कहिसंती ठीक अछि अंकिता वेरी गुड डिस्कशन सेंटर किछि न थाए टीचर सेंटर अछि लर्निंग सेंटर अछि लर्नर सेंटर अछि डिस्कशन सेंटर किछि न थाए डिस्कशन ता गोटे प्रोसेस गोटे टीचिंग प्रोसेस गोटे yes 28 ର आंसर दियंतु which of the following method is learner centered ए चारटा जक भितर कोटा गोटे लर्नर सेंटर मेथड डिस्कशन डेमोन्स्ट्रेशन नरेशन ना प्रोजेक्ट ए क्वेश्चन मध्ये हम डिस्कशन करथिले वेरी गुड प्रोजेक्ट मेथड क्वेश्चन नंबर 29 आंसर दियंतु which of the following is most important in learner centered curriculum गोटे लर्नर सेंटर करिकुलम रे कोटा सबठो इंपोर्टेंट रहिबो इजी क्वेश्चन मध्ये आसेछि पिला माने एटा होछ तार एग्जांपल यस चाइल्ड है जिबा हमर कोन सेंटर लर्नर सेंटर रे तो चाइल्ड हमर सेंटर हो क्वेश्चन नंबर 30 रे आंसर दियंतु यस 27 तक को मु जाउजी ए आंसर ता दे दियंतु 27 नंबर थिला डिस्कशन सेंटर किछि न थाए लर्नर सेंटर हैला लर्निंग सेंटर टीचर सेंटर ए सब थाए जिंसो डिस्कशन सेंटर किछि न थाए डिस्कशन ता गोटे प्रोसेस क्लियर डिस्कशन ता गोटे मेथड डिस्कशन मेथड रे टीचिंग दबा केमिति डिस्कशन मेथड यूज करी के हम क्लासरूम रे टीचिंग दबा डिस्कशन सेंटर किछि गोटे न थाए सेथि पई सारा डिफरेंट हैला बुझी परला रश्मि रंजन 30 आंसर दियंतु which of the following are only visual aid केवल visual aid कथा कहिची 30A yes very good ब्लैक बोर्ड हैला चैट हैला फ्लैश कार्ड हैला इस विजुअल एड एथरे रेडियो कथा पळे आछी टीवी कथा पळे आछी ऑडियो कथा एटा ऑडियो विजुअल देन रेडियो होची ऑडियो माने ऑडियो कथा पळे आसला टेप रिकॉर्ड ए सब विजुअल एड रे जाउनी केवल विजुअल एड कथा कहिछि सेति हमर ए इज द करेक्ट आंसर थैंक यू सो मच पिला माने काली रे एग्जाम पई समस्त को ऑल द बेस्ट सुनंतु काली रे एग्जाम रे आपण माने देखंतु आपण मानो किछटा इंपोर्टेंट टॉपिक कहि दोची बस कहि दोची सुनंतु पियाजेट थ्योरी भाइगर्स की थ्योरी सब थ्योरी गुडा किछि भी स्किप करिबेनी आउ थरे थरे देखि देबे थ्रंडाइंग कर थ्योरी ट्रायल एंड एरर थ्योरी हैला कोहलर कर भी क्वेश्चन पडुची कोहलर को ऊपर मध्ये क्वेश्चन पडुची
जेहेतु डिस्कशन सेंटर कथा कही देखो मैं आउ थे कही दउची डिस्कशन सेंटर कथा कही जदि डिस्कशन मेथड कही था देन आमर टीचर सेंटरटा अलग होई थांदा एठी कोन कहिची टीचर सेंटर कहिची लर्नर सेंटर कहिची लर्निंग सेंटर कहिची आपण जे कहया पई चाहू छ मैं बुझी पारुची क्वेश्चन को तो देखिबा हम यदि ऑप्शन को एनालिसिस करिबा देन एठी डिस्कशन सेंटर हे जबो डिफरेंट बुझी परले जदि एठी डिस्कशन मेथड कहि थांता देन एटा लर्नर सेंटर लर्निंग सेंटर डिस्कशन मेथड ए तीनटा जाको गोटे हे थांता टीचर सेंटरटा अलग हे थांता बुझी पारले शुभश्री एठी काहे कि डिस्कशन सेंटर कहिची पर्टिकुलर सेंटर वर्ड पाई एटा डिफरेंट हे गला क्लियर ठीक अछि पिला माने ओके ठीक अछि देखंतु ए सब किछि भी स्किप करिबेनी असेसमेंट इवैल्यूएशन देखि जिबे आउ सब्जेक्ट पेडा को जते आपण माने देखिबे ही स्पेशली जो चारटा जाक स्टेज ऊपर बारंबार हमर क्वेश्चन आसुची से चारटा जाक स्टेज को केबे भी स्किप करिबेनी पीएजेट को स्टेज उडा सब देखिबे तार जो इंपोर्टेंट वर्ड रहउची इंपोर्टेंट पॉइंट गोटोट रहउची सेगुडा सब देखिबे आ काली पूरा माइंडफुली बेसी पैनिक हेबेनी केयरफुली आपण ब्लैक एंड करिवे जंतो ऑफलाइन एग्जाम रहउची जेमती हड़बड़ है कि भूल भाल ब्लैक एंड करिवेनी पिला माने बहुत टाइम रे करंते कि 11 नंबर क्वेश्चन टा पढुथिबे किंतु 10 नंबर रे ब्लैक एंड टा कर देथिबे किबा 12 नंबर रे कर देथिबे सेटा करिवेनी माइंडफुली करिवे ठीक अछि समस्त एग्जाम भलो हबो थैंक यू सो मच काली पे समस्त को ऑल द बेस्ट थैंक यू।